अब से कुछ अर्सा पहले आई वॉज कंडक्टिंग अ वर्कशॉप इन अ प्राइवेट स्कूल इन लाहौर फॉर स्टूडेंट्स क्लास 4 या क्लास 5 के होंगे. एंड थ्रू द वर्कशॉप, अभी जब वर्कशॉप हो रही थी, द स्टूडेंट्स गॉट अप एंड कहा कि जी सर, कैन यू प्लीज कंडक्ट दिस वर्कशॉप इन इंग्लिश. तो मैंने कहा आपको उर्दू नहीं समझ आ रही? तो मैंने कहा नहीं जी, हमें उर्दू नहीं समझ आ रही. तो मैंने कहा वो अच्छा, सो आप लोग बाहर से आए हैं वापस? हैव यू मूव्ड बैक फ्रॉम अब्रॉड और डिड यू ग्रो अप व्हेन यू वर एज अ यंग पर्सन, डिड यू ग्रो अप अब्रॉड? उन्होंने कहा नहीं जी, हम रहे पूरी जिंदगी पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन हमारी उर्दू बहुत वीक है, हमें उर्दू आती नहीं है. That got me really surprised. That got me really shocked. But it took me back to the time when I used to live in London myself. And I used to take pride कि देखो मैं लंदन में रहता हूँ, the prestige of being associated with that city. All of these experiences, all of these instances made me think about the role of language within our education system. कि तालीमी निज़ाम के अंदर आपकी ज़बान का क्या रोल होता है और किस तरीके से वो आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है. इंग्लिश मीडियम, गुड क्वालिटी. अगर इस मुल्क में किसी ने आपको सिग्नल करना हो कि वो पढ़े लिखे हैं, तो दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश. अभी रिसेंटली ऑन सोशल मीडिया देयर वाज न्यूज़ के एक स्कूल ने बच्चों को फाइन किया बिकॉज दे वर स्पीकिंग इन उर्दू और पंजाबी. As if speaking in Urdu or Punjabi is a gunah, is an ill. English medium school, good quality school. Urdu medium, मैंने अपने अभी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट से पूछा, और आप लोगों से भी यही सवाल करूंगा, अपने दिमाग में सोचना है, बोलना नहीं है, कि जिस शख्स को अंग्रेजी ना आती हो, उन लोगों को हम कलोकियली क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश नहीं आती, उनको हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनके लिए? वो कौन होते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? खुद ही अपने जहन में सोचिए. देयर इज नो प्रॉब्लम विद स्पीकिंग इन इंग्लिश. वी आर अ कंट्री वेयर देयर इज अ बर्जनिंग यूथ पॉपुलेशन. हमारे यंग लोगों को एक्सेस मिलता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का बाहर. यंग पीपल कैन मूव अब्रॉड फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा. एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो being able to speak in a language enables us to access different other countries, connect with people from different backgrounds across the world, which is great. But the problem really starts when this language gets started taken as a symbol of power, as a symbol of influence. So let's talk about our education sector itself. तालीम हर बच्चे का फर्ज है. इस मुल्क में हर बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए, चाहे वो बच्चा मर्द हो या औरत हो, चाहे वो बच्चा क्वेटा में हो या लाहौर में हो, नॉर्थ में हो या साउथ में हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, हर बच्चे का बुनियादी फर्ज है कि उसको तालीम मिले. लेकिन मैं क्या करूं कि अगर उस तालीमी निज़ाम में ही इनइक्विटी उसकी जड़ों में ही शामिल है, कि within the education systems there's injustice that's at the root of this education complex. And here comes the role of language in education. In a post-colonial society that we live in, जहाँ पे हम rule हो रहे थे British से, who have now left, but left us with systems and structures that are still intact. Never mind कि हम बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी वगैरह तो बाद में आएगा. किस लैंग्वेज में हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम उन्हें क्या सिग्नल दे रहे हैं कि दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द एलीट. हम अज्यूम करते हैं कि तमाम बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनका मुस्तकबिल रोशन होगा और एक हम ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे जो इक्विटेबल होगी, जिसमें इंसाफ मिलेगा सबको, जिसमें लोग बराबर होंगे. लेकिन टीचिंग इन अ फॉरेन लैंग्वेज, टीचिंग चिल्ड्रन इन अ लैंग्वेज दैट्स नॉट इवन देयर्स, is a fundamental cause of the injustice that we're inflicting on our children. The imposition of English language in the education sector in Pakistan is also known as symbolic violence against people. Symbolic violence क्या होती है कि एक particular culture, एक particular तबका अपनी cultural values impose कर देता है दूसरों के ऊपर, से डोमिनेट करना शुरू हो जाता है उनको,
और एक ऐसा निज़ाम सोशली कंस्ट्रक्ट होता है कि जहां पे वो वैल्यूज जो डोमिनेटेड ग्रुप की हैं, जो उनका कैपिटल है, दैट्स बेटर, एंड द वैल्यूज ऑफ द डोमिनेटेड ग्रुप, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जुल्म की बात यह है कि जो डोमिनेटेड ग्रुप भी होता है उसको भी यही लगता है कि दिस इज व्हाट द नॉर्म इज, दैट्स हाउ थिंग्स आर, सो देयरफॉर वी एक्सेप्ट द सुपीरियरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ये सब सोशल कंस्ट्रक्शन, ये माइंड कंडीशनिंग जो है, has made us look at English language as a superior language that we need to acquire to be part of the powerful. जो oppressed है वो यही सोच रहा है कि हमारी गलती है, ये हमारी fault है कि हमें ये चीज़ आती नहीं है, तो so therefore we are going to lose. Forgetting the fact or not knowing the fact कि the rules of the game were made to make them lose. And they can never win this game. Some people may succeed in winning this game. मैं, for example, आपके सामने खड़ा हुआ, I've won this game because I've won through the system. आप सब यहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं, जिनको मेरी इंग्लिश में भी बात समझ आ रही है, आप सब, you've also won the game. But winning this game comes at a price. That price is the dislocation of ourself. That price is the renunciation of our past, of our identity, of our own language. हम हैं कौन? हम इंडियंस हैं, हम अरबी हैं, हम टर्किश हैं, या मे बी हम ब्रिटिश हैं। क्यों है कि हमारी अपनी लैंग्वेजेस को वो इंपॉर्टेंस, वो तरजीह नहीं मिलती विद इन आवर एजुकेशन सिस्टम। वो लोकल लैंग्वेज पंजाबी हो या सराइकी, पश्तो हो या बलोची, सिंधी हो या जो भी हमारी अपनी लोकल लैंग्वेज, उसमें तालीम को वो फौकियत क्यों नहीं हासिल? मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कहूं, क्या बताऊं कि इन ऑर्डर टू विन इन दिस सिस्टम, in order to succeed in this system, you will have to let go of the most precious thing that you have, which is your own self. वो स्टूडेंट चाहे डस्का में बैठा हो या टैक्सिला में, लाहौर की किसी बस्ती में हो या क्वेटा में, पेशावर में हो कि सिंध में हो, they cannot succeed until and unless they adopt a particular model of what I feel, what I see as a successful person who is able to fluently speak in English. जब तक वो नहीं बनेंगे, तब तक तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तब तक तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। सो इन ऑर्डर टू विन इन दिस गेम, यू विल हैव टू लूज व्हाट यू हैव। तो मैं किस मुंह से उन बच्चों को स्कूलों में इनरोल कराऊं, किस मुंह से मैं उन बच्चों को स्कूलों में लेके आऊं, क्योंकि वही एजुकेशन सिस्टम, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन इक्विटेबल सोसाइटी, इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ फर्दर डिवाइड, is actually marginalizing our people even more. I go back to the 18, 19-year-old me, roaming around on the streets of London when I went for my education and started living there, thinking कि यार मेरे साथ क्या हुआ कि मैं घूम फिर के तालीम लेके पाकिस्तान में पढ़ के मैं लंदन पहुंच गया, and how I'm now a fit in the London society more than perhaps I'm a fit in Lahore myself. मेरे तालीमी निज़ाम ने, मेरी अपनी एजुकेशन ने मुझे किस तरीके से बदला, किस तरीके से मोल्ड किया और क्या बनाया, that I've become a Londoner than a Lahori who I was. So the next time that you ever talk to anyone in English, if you ever hear a speaker like this delivering a talk in English, if you're ever conducting an interview in English, if you're communicating in English in class, do think. अगर आपको इस चीज़ से कोई मसला नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लैंग्वेज है, हम बोल रहे हैं, श्योर। लेकिन इफ़ यू रियली थिंक कि इस ज़बान की वजह से, इस ज़बान की ऑब्सेशन की वजह से, we're actually dividing ourselves more and we're marginalizing people even further more, then do think of what we as individuals and what we as a collective need to do. Because if we really need to connect with people through language, then we need to start thinking about creating a society that's equitable for everyone. Thank you.